morning students. Today we are going to do page number 34, chapter 5, 3rd grade EVS. Here, draw picture of any two animals that live in your house uninvited. Write their names below the pictures. Those animals we are not invited but also in our house. So you have to draw here two animals in this box and write their name. So I am giving one example, rat and lizard, and you have to write their name here, and you have to draw here the pictures of that animal. Now next, do you keep your house clean? How you are keeping your house clean? आप अपना घर कैसे clean रखते हो? So if you are not keeping, if your mother is keeping clean, then how she is keeping the house clean? Here at home we are using the broomstick to clean the house. To keep the floor clean, we use the mopping, and we are cleaning, we are dusting everything, windows, door, kitchen door, everything we are dusting every day. So this way we are keeping our house clean. Now, who all help you to clean your house? Who help to keep your house clean? कौन आपको घर पे हेल्प करता है हाउस क्लीन करने में? If there is in your house is maid servant, if your mother, if your father, who is helping you to clean your house? आपको घर में कौन हेल्प करता है? Where do you go to freshen up in the morning? Morning में आप freshen up means if you are using toilet for it is freshen up means whenever we are getting toilets or anything we are using this word freshen up. Morning में हमको washroom जाना होता है, we are using the toilet. So that where we are going, we are using the toilet. Where do you throw the garbage of your house? आप अपना घर का garbage होता है, कचरा होता है. Where do you throwing? So we are using the dustbin, or we are using the dustbin that keep outside of the road, that we are using to keep it clean. Now next here, page number 35. Page 35. Is the area around your house clean? आपके घर के around में जो area है वो clean है? Do you use a toilet in or around your house? There is a public toilet. See, in your surrounding area, is there any public toilet that people are using, or you are using the toilet? Who clean it? वो public toilet होता है that all the people are using. वो कौन clean करता है? How do you help in keeping it clean? आप उसको clean करने में कैसे help करते हो? So if you observe that public toilet, आप कभी बाजार में जाओगे, so have you observed the public toilet? Who is keeping clean? So that our नगर पालिका और our पंचायत, that people are making to clean it. वो people है जो a public toilet है उसको use कर, they are keeping clean. What they are doing? They are keeping clean. Now here is one use of toilet. Now here Simmi and Billu, they are talking together. वो दोनों बात कर रहे, they are friends and they are talking. And here Billu having some problem, and Simmi is suggesting something him, कुछ उसको suggest करे. Let's see. Simmi noticed that her friend Billu was getting uncomfortable. He was not talking to her. Here topic is their use of toilet, and Simmi and Billu, they are talking together. Now Simmi is feeling that some problem with the Billu. So he is telling he is not talking with me. वो मेरे साथ बातें नहीं कर रहा है. Now they are talking. Simmi says, Billu, what happened? You look so dull. Means Simmi is telling that
something is happened to you. What happened? Billu says, I don't know how to use the toilet properly. Hira ma'am would be on her round again. She would scold me as usual for not using the toilet properly. Now what happened to Billu? He doesn't know how to use toilet. उसको टॉयलेट कैसे यूज करना है वो उसको मालूम नहीं है. बिल्लू डोंट नो हाउ टू यूज टॉयलेट. नाउ व्हाट हैपन विद द बिल्लू? बिल्लू के साथ क्या होता है? नाउ दिस इज द रॉन्ग पोजीशन. ही इज सिटिंग हियर. इट इज द रॉन्ग पोजीशन. सो वी हैव टू यूज द टॉयलेट पिट टू यूज द टॉयलेट. ओके, इसकी रॉन्ग पोजीशन है जो यहाँ पर बैठा है वो. इट इज द रॉन्ग. वी हैव टू यूज दिस टॉयलेट पिट. नाउ सिमी, why do you use the toilet properly then? Why you don't know to use the toilet properly then? Billu said, I am scared that I will fall in the toilet pit. Okay, some of the children are scared about the toilet pit. वो डर जाते हैं कि if they will fall down, वही वो गिर ना जाए. So this toilet pit is too small. You can sit there, you cannot fall down. कभी कभी बच्चे ऐसे होते हैं जो डर जाते हैं टॉयलेट यूज करने में, कि उनको डर लगता है अंदर जाने में, तो वो लोग यूज नहीं करते हैं. सिमी सेज, हाउ स्टूपिड एंड नाउ आई नो इट इज योर एंड मैनी ऑफ योर फ्रेंड्स लाइक यू हु मेक अवर टॉयलेट सो डर्टी बाय नॉट यूजिंग द टॉयलेट प्रॉपरली. नाउ व्हाट हैपन? सिमी सेज, आप और ऐसे दूसरे भी बच्चे हैं जो उनको टॉयलेट यूज करना नहीं आता है एंड दे आर मेकिंग टॉयलेट डर्टी. डोंट बी स्कैर्ड. वो बोलती है डरना नहीं है. वी हैव टू यूज द टॉयलेट प्रॉपरली. बी रिस्पॉन्सिबल. उनको रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए बोलती है कि हमको टॉयलेट से डरना नहीं है, टॉयलेट जाने में डरना नहीं है. वी हैव टू यूज द टॉयलेट प्रॉपरली. लेट अस नाउ सी हाउ टू बी रिस्पॉन्सिबल. वो उसको सिखाती है कि कैसे बैठना है. यूज द टॉयलेट बाय सिटिंग प्रॉपरली. उनको बैठने के लिए कैसे बैठना है वो बोलती है. ऑलवेज फ्लश इट विद द वाटर आफ्टर यूज. ओके, व्हाट वी आर डूइंग? वी आर यूजिंग द टॉयलेट बट समटाइम्स वी आर नॉट फ्लशिंग. सो वी हैव टू फ्लश द टॉयलेट आफ्टर यूज इट. वॉश योर सेल्फ प्रॉपरली. वी हैव टू वॉश अवर हैंड्स, लेग्स, एवरीथिंग after using the toilet. Wash your hands thoroughly. Okay, हमारे hand, if we are using soap, if we are using hand wash, we have to use it and we have to wash our hands also and legs also. Now page number 36. This is page number 5. Now turn the page 36. Now here is one picture how to use toilet. टॉयलेट को कैसे यूज करना है. ओके, लीव द टॉयलेट एज क्लीन एज यू वॉन्ट इट फॉर योर सेल्फ. टॉयलेट वी आर नॉट कीपिंग फॉर अदर्स, वी आर डूइंग अवर सेल्फ. हमारे लिए हमको टॉयलेट क्लीन रखना है. इफ टॉयलेट इज नॉट क्लीन देयर फ्लाइज विल कम एंड इट विल सिट ऑन दैट एंड इट विल फ्लाई एवरीवेयर. सो वी हैव टू कीप अवर टॉयलेट clean. How to clean the toilet? We have to flush the toilet. If there is a flush machine is there, then we have to flush the toilet. If there is no flush machine, then we have to use that jug or bucket, whatever we have to throw into the toilet pit. We have to flush the toilet with the bucket and jug. Now here one more information about you, that for Gandhiji's 150th birthday, the Swachh Bharat Abhiyan was launched. It is to help us realize that cleanliness is everyone's duty and responsibility. यहाँ पर ये आपको दिया है, वो किस लिए दिया है? That it is स्वच्छ भारत अभियान मिशन है हमारा, जो हमारे इंडिया को, that Modi ji has launched this mission Swachh Bharat Abhiyan in our India. So we have to keep ourselves clean, our surrounding area clean, and that is our duty to clean our surrounding area and our house also. So you can draw this picture.
in your notebook. If you get more picture about the Swachh Bharat mission, you can draw it in your notebook. Now, describe the toilet area in your school. आपके स्कूल के अराउंड में और स्कूल में भी टॉयलेट है तो आपको देखना है. इज इट क्लीन? वो क्लीन है. हु क्लीन इट एंड हाउ? स्कूल में कौन क्लीन करता है और कैसे क्लीन करता है. हाउ डू यू हेल्प इन इट? आप कैसे हेल्प कर सकते हो. इन अवर स्कूल दैट मेड आर मेकिंग क्लीन द टॉयलेट्स एंड दे आर washing and they are mopping also and they are flushing also. But how we will clean? After using the toilet, we should flush it properly. Now about the Billu. From now, Billu used the toilet responsibly. He left it clean. After it, used and washed its hands. Now what happened? Billu understand how to use the toilet. So now you also understood that how to use the toilet and we have to wash our hand after using it. Do you leave the toilet as clean as you want it yourself? आप अपने आप से टॉयलेट क्लीन करते हो और you are keeping clean yourself. Enlist the item when you wash hand. आप कब हैंड वॉश करते हो. When do you think your hands get dirty? कब आपके हैंड्स डर्टी होते हैं. You have to just think. Okay. When all do you need to keep yourself? कब we ourself we have to clean. So we are bathing and brushing teeth. वो we are doing. Clipping the nails रेगुलरली. हमारे नेल्स हमको रेगुलरली कट करने चाहिए. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड कट आवर नेल्स रेगुलरली एंड वी हैव टू ब्रश एवरी डे. दिन में 2 बार वी हैव टू ब्रश आवर टीथ. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड प्रॉपरली टू क्लीन आवर सेल्फ. नाउ हियर पेज नंबर 37 and it is very important for you that how we are decorating our house and when we are decorating our house. Look how beautifully Lakta's house is decorated. Now here one of the house and name whose house it is? Lakta's house. वो किसका house है? Lakta's house. And how she is decorate her house. Is there any special way in which you decorate your house? When and how? आप अपना घर कब डेकोरेट करते हो? When you are decorating your house and how? कैसे करते हो? So in the special occasion, if there is a Diwali, if there is a Christmas, if there is a Eid, so our special occasion we are decorating our house and we are cleaning our house. So here Lakta also decorate her house. So this answer you will get in the worksheet. You will write down here. आपको ये आंसर वर्कशीट में मिल जाएगा. आपको यहाँ पर लिखना है. Now, ask your friend when and how they decorate their house. You have to ask your friends कि आप अपना घर कैसे डेकोरेट करते हो और कब करते हो. Which festival you are decorating your house or how. Name the things with which you decorate your house. आप what you are using to decorate your house. आप क्या यूज करते हो घर डेकोरेट करने के लिए. So we are using the flowers, painting, ribbons, lights, fancy lights and different type of painting we are using to decorate our house. So you will write this answer from your worksheet. आपको ये आंसर दोनों के आंसर वर्कशीट में से लिखने हैं. I hope you have understood this topic to decorate the house. Page number 37.